respected director of the institution, dignified faculty members, and of course all the students here, I wish you all heartfelt Republic Day. My name is Amir. I'm a student of Government Degree College Doda, and today I feel myself very fortunate to be here on this stage in one of the best institutions like I have ever seen. Till now I had been teaching in a number of the institutions, but here in this institution, but very to be very precise and very particular, I felt a number of different things. And this very event of Republic Day, for the first time, I had witnessed in any of the institution that this is being celebrated in any coaching institute. Now, everything we need to know about the Republic Day has already been discussed by the different number of participants here. Everybody came here and performed their speeches. It was amazing to see everybody performing so well. There were different type of participations. There were songs, there were dances, there were different type of speeches and debates. It was all very good. And you know most importantly, which I would like to say, is that everybody came here and told different number of things. What is Republic Day, why it should be celebrated, and what we actually need to do on this day and after this day. That's very important to know for all of us. One thing I must say that my health is not up to the level, so my voice is not more accurate as it should have been, but still I'll try my best to convince you with my wordings. See, all of the participants, everybody who came here and delivered their speeches, told one thing, that we had been in the control, we had been under the guardianship of the Britishers here, right, till 1947, and they came here in 1600. They came earlier as well. They came in 1500. They were also Europeans, but we do focus more on the Britishers. They came in 1600 because they came here to trade and made it their territory. But other Europeans like Portuguese, Dutch, and others who also came here, who also interfered here, who also did trades here, they didn't come to conquer it. They didn't come to make it a territory. They just came here for the purpose of trade. But we gave more importance to only the Britishers because they also came with the intention of trading here. But after that, knowing that, what is the I am coming to the most important thing, what I need to say. See, our constitution is best in the world, as also one of the participants said that our constitution is the best. Of course, it is the best written constitution in the world, and also the lengthiest written constitution of the world, because it has a reason. Our constitution framers, the members of our constituent assembly, had scrutinized, has deeply studied all the best constitutions of the world, and after that we have taken the best features of all the constitutions of the world into our Indian constitution. So that's one of the biggest thing, and we are very luckiest to have this constitution. But the most important thing, we need to understand that only the things which are present in front of us in any written sort or any in theoretical aspects, that is not only important. The most important thing is that, and it was actually the last speech of one of the member of the Constituent Assembly in 1946. Yeah, as I remember, he told that it is up to the citizens of the India, it is up to the citizens of the country. You can make this constitution as the best in the world or the worst in the world. It depends upon the citizens of the India. See, our constitution is the lengthiest written constitution in the world. It has a preamble. Originally, it had 395 articles. It had 22 parts. It has 8 schedules. And right now, it has more than 470 articles. It has 12 schedules. It has 25 parts. So this constitution is basically for all of the Indians, for all the citizens, to tell us what are our rights, what are our limits, what we need to do, what we do not need to do. If our constitution is the best in the world, then why we are not in the best in the world? This is the question we need to understand. Only coming here, sharing as what we people actually do when any of such event comes, like 15th August or Republic Day, we people just take it as that the most important thing we need to do on this day. What the mindset of our mindset is that just we need to hoist the flag,
we need to go with the slogans, we need to vendor in the streets, Jai Hind, Jai Bharat. Yeah, it is important, it is very important. But more than this, what our constitution framers, what our freedom fighters wanted this India to be like, we need to think, is this that sort, like what they expected India to be? Many of the participants came here, they told about Bhimrao Ambedkar. Bhimrao Ambedkar is also known as the father of the constitution. He was not the only, and also it is being said that he wrote the constitution. He was not the only person who wrote the constitution, but it was actually in 1934 M.N. Roy who put the idea of the Constituent Assembly, that we have to make a Constituent Assembly which will draft the constitution for India. And after that, the cabinet mission from Britain came and we had a Constituent Assembly, and that Constituent Assembly has near around 300 members, and that Constituent Assembly has different number of committees, and the committees were assigned with different tasks, like you have to draft the constitution, you have to do this sort of work, and you have to do this sort of work, so that our constitution gets completed and becomes one of the best. The most important part of the constitution was the drafting part, and Bhimrao Ambedkar was the head of the drafting committee. He didn't write, he has also many numbers. There were 7 members in the drafting committee, right? Whenever we say anything about constitution, he struck our mind. What struck our mind? Dr. Bhimrao Ambedkar, because he is known as the father of the constitution, head of the drafting committee. Why? What he actually intended for, what he actually fought for, was that there should not be any discrimination. There are different castes. India is known for its multi-diversity, that there are different religions, there are different castes, there are different peoples, and they live with the proper cooperation. This is what India is known for. India is very famous for this thing. Dr. Bhimrao Ambedkar always fought for this thing, that there shouldn't be any kind of discrimination, because he has faced the discrimination when he was a student. Everybody must be aware of this, that when he was a student, he was not allowed to enter the class. He was always kept outside the door, and he used to take lecture from there. And after that, he became the father of the constitution. That is the biggest achievement in itself. And after that, he became a journalist, he became a lawyer, he had excelled in different number of professions. Dr. Bhimrao Ambedkar, he always fought for that there should not be this caste difference. This is nowhere mentioned in our books. See, we always blame Britishers, that they came here, they did so wrong, they did so wrong, they did so wrong. They have done very good to us as well. It was we peoples, we were not united, we were distributed where they came, and they used the policy of divide and rule. They use the policy of divide and rule. What we literally say, our Indian history, we take Indian history as ancient, medieval, and modern. This is our distribution of history, and we have taken it from the world's point of view. But how Britain has distributed the Indian history, they have told it as firstly Hindus, after that Muslim, after that British. That means that initially Hindu despots used to rule here. There was no sort of knowledge. There were so bad customs, bad conventions existing in our society. There was sati pratha and child marriage and everything. जो चीज हमारी सोसाइटी को सबसे खराब बना दे, वो सारी चीजें हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती थी, ठीक है. But there was Raja Roman Rai and other other reformers whom we gave credit. उन्होंने इस चीज के लिए आवाज उठाई कि ऐसा नहीं होना चाहिए, but it was Britishers who signed the things that sati pratha should be banned. Sati pratha, everybody knows what is sati pratha, right? That if a girl is married, her husband dies, and after that she has to be burned there with him. ठीक है, वो रह नहीं सकती जिंदा, फिर उसको भी वहीं पे जला देना. And this was only one of the custom. ऐसी बहुत सारी चीजें हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती थी. लेकिन कहने का मतलब यह है कि हम उनको सपोर्ट नहीं करें. कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सिर्फ और सिर्फ हम सिटीजन्स की गलती है. हम लोग तब भी डिस्ट्रीब्यूटेड थे, आज भी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं.
अगर हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स, हमारे सब लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी हम उनको तो कुछ वापस दें, ठीक है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ओपनिंग फेज जो होता है वो होता है प्रियम्बल हमें ये बोलता है कि वी आर सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हम सॉवरेन है, मतलब कि इंडिया के लोग सबसे पावरफुल हैं, यहाँ की गवर्नमेंट उतनी पावरफुल नहीं, यहाँ की स्टेट उतनी पावरफुल नहीं, सबसे ज्यादा पावर लोगों के पास है, पीपल्स आर द मोस्ट पावरफुल। अगर इतना बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है फिर भी हमारी कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा, हमारी कंट्री का क्राइम रेट सबसे ज्यादा, हमारी कंट्री में डिफरेंट नंबर ऑफ केसेस ऐसा है कि मोर देन 70-80 केसेस पर डे पर वीक, रेप केसेस एंड एवरीथिंग, ये सब हमारी कंट्री में हो रहा है, इवन आफ्टर हैविंग द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। और हम लोगों की सबसे बड़ी गलती ये है कि हम ब्लेम करते हैं हर चीज को गवर्नमेंट को, ठीक है, कि हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने ये किया, उस गवर्नमेंट में ये हो रहा है। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि गवर्नमेंट को आप ही लोग तो बनाते हैं, हम ही लोग तो बनाते हैं, हम ही लोग तो वोट देते हैं ना, हम लोगों की, इसीलिए तो उन्होंने बोला कि सिटीजन्स पे डिपेंड करता है, वो इसको बेस्ट भी बना सकते हैं, वर्स्ट भी बना सकते हैं। हम लोगों को वोट देने का क्राइटेरिया क्या रहता है? हमारी कास्ट, हमारा मजहब, हमारी फैमिली, हमारे नेबर्स इस पार्टी को वोट दे रहे हैं, इन लोगों को वोट दे रहे हैं, तो हम भी इन्हीं को देंगे। ऐसा है हम लोगों ने कभी किसी लीडर का, किसी पार्टी का, अगर अभी भी मैं पूछ रहा हूं कि किसी को भी कि आप किस बेस पे किसी को भी वोट दे रहे हैं, किसी भी पार्टी को वोट दे रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि उनका रिप्लाई ऐसा ही होगा। मतलब किसी को भी जो माइंडसेट है, जो आइडियोलॉजी है कि इस पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, इस पार्टी का माइंडसेट क्या है, वो किसी को पता नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं एक किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, जितनी भी सरकारें हैं, जितनी भी गवर्नमेंट्स बन रही हैं, हम लोग चूज कर रहे हैं और हम ही लोग ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग चूज कर रहे हैं, हम ही लोग ब्लेम, हमें ये पता नहीं चलता कि हमें वोट देना किसको है, हमें कौन सी पार्टी को वोट देना ताकि हमें बेस्ट रिजल्ट मिले। हम लोग नेशनलिज्म को हमेशा क्या मानते हैं, या पैट्रियोटिज्म को हमेशा क्या मानते हैं, ठीक है, देश के नारे लगाना, हिंदुस्तान जिंदाबाद वगैरह, ऐसा सब हमारे लिए सबसे बड़ी बात यही है। हम एज अ इंडिविजुअल, हम सिर्फ आर्मी में ना जाएं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हम वहां पे भी अपने देश के लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक टीचर हैं, आप अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से पढ़ाइए कि वो उनका करियर बने अच्छे से, ठीक है, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझे, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक अच्छे सिटीजन बने, एक अच्छे इंडियन बने। तो इससे बड़ी एक टीचर के लिए क्या कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए एक देश के लिए? सबसे बड़ी पैट्रियोटिज्म तो ये, आप जिस भी प्रोफेशन में जो भी कर रहे हैं, आप उसको ऑनेस्टली करिए, आप अपने जो सेल्फ इंटेंशन है उनको ना लाइए बीच में, ठीक है। आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आपके साथ कोई गरीब बच्चा है, अगर आपके साथ कोई लोअर कास्ट का बच्चा, कम मत समझिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप आगे सिर्फ स्पीच ही नहीं देनी है, उसको रियल लाइफ में प्रैक्टिस करनी है। आपने कितनों की हेल्प की, जिसने भी कितने बच्चों की आपने हेल्प की कि मैं इसको थोड़ी सी हेल्प कर दूं, पैसे के मसले से हम लोगों के पास, जिसके पास है, या किसी भी तरीके से, ताकि वो बच्चा भी पढ़ पाए, ताकि वो बच्चा भी कर पाए, ये सबसे बड़ी नेशनलिज्म है, ठीक है। सब लोग बॉर्डर पे नहीं जा सकते, पॉपुलेशन को यहाँ पे भी रहना, सब लोग टीचर नहीं बन सकते, सब लोग डॉक्टर, प्रोफेसर कुछ नहीं बन सकते, है ना। कुछ ही लोगों ने हर एक प्रोफेशन में जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम जो भी कर रहे हैं, एक डॉक्टर के लिए नेशनलिज्म हथियार उठाना नहीं है, ठीक है। एक डॉक्टर के लिए कि वो 24/7 दिल से अवेलेबल रहे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो रहे, अपनी भी जो होती है वैसा भी नहीं है, बट वो दिल से काम करे, कि मजबूरन काम ना करे, अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए काम ना करे। एक टीचर सिर्फ महीना पूरा करने के लिए ड्यूटी ना करे, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। एक स्टूडेंट सिर्फ घर वालों ने भेजा 10 to 4 स्कूल, उस चीज से, उस इंटेंशन से काम ना करे, अपने लिए पढ़ने जाए, अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहे। एक डॉक्टर अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहे। हर एक जो भी इंसान जो भी कर रहा है, वो उस काम में जब ऑनेस्ट रहेगा, कोई भी ना अपनी जात का, ना अपने पेरेंट्स का, ना अपने क्लोज किसी का भी इंटेंशन ना रख के, जिस काम के लिए जा रहा है, जिस प्रोफेशन में है, जिस चीज के लिए सूटेड है, वो ईमानदारी से करे, तो हम उन लोगों का ड्रीम, जिन लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो लोग हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो वो चाहते थे हमसे, तो हम पूरा कर सकते। सिर्फ उनके नाम की मालाएं चढ़ाना या ऐसा कुछ करना, डाइसिस पे फ्लैग, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, बट इट इज ऑलवेज द सेकंड प्रेफरेंस।
फर्स्ट प्रेफरेंस है हमेशा कि हम उनकी आइडियोलॉजी को पढ़ें, उनकी सोच को पढ़ें कि वो हमसे चाहते क्या थे। अगर भगत सिंह इतना ब्रेव था कि ही एग्रीड टू हैंग हिमसेल्फ, कि भाई मैं फांसी मैं खुद को फांसी दिला सकता हूं, तो सीखने को हमें ये मिला कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप आवाज उठाइए, है ना। बी ब्रेव इन योर सेल्फ, ठीक है, डरो मत। मतलब अगर आप अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ जी रहे हैं तो आपको रिस्क लेना इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेटिव रिस्क लेना इंपॉर्टेंट, हर एक फ्रीडम फाइटर। लेकिन आज के टाइम पे हम लोग वो नहीं कर रहे, ठीक है। अगर मैं अभी सिंपल किसी भी बच्चे से पूछूं, मतलब इंक्लूडिंग मी, सभी का, कि सलमान खान कौन है या ऐसा किसी भी सेलिब्रिटी का नाम हर एक जानेगा, फिर मैं पूछूंगा कि अशफाकुल्ला खान का हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो नहीं पता होगा हम लोगों को, है ना। तो हम लोग उनसे वापस नहीं दे रहे जो हमसे चाहते थे, ठीक है। रिपब्लिक डे के मनाने का सबसे अच्छा मजा तब होगा जब हम एक्चुअली, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स हमसे चाहते थे। एक और बात मुझे लास्ट पे कंक्लूडिंग में स्पीच कर रहा हूं, उसने बोला था कि फाइनल स्पीच में ही उन्होंने ये भी बोला था कि इनिशियली यू हैड द पीपल्स होम यू कैन आस्क क्वेश्चंस, कि पहले इंडिपेंडेंस से पहले जब ब्रिटेन वाले आप पे रूल कर रहे थे तो आपके पास कुछ लोग थे जिनको आप क्वेश्चन कर सकते थे कि ताकि हम डेवलप्ड नहीं है, इसलिए हम पीछे हैं कि वो हम पे रूल करें। बट व्हाट इफ उनके बाद फिर आप क्वेश्चन भी किसको करेंगे? अभी तो आपके पास एक चीज आप इल्जाम लगा सकते हैं, बट व्हाट इफ, अब सिंपल सी बात है, अगर आज के टाइम पे भी अगर एक लड़की के साथ गलत हो रहा है या रेप केस हो रहा है या किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो उसके लिए कौन सी डेमोक्रेसी है, उसके लिए कौन सी सॉवरेनिटी, उसके लिए कौन सा बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है ना। अगर एक गरीब का बच्चा या कोई भी बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा है, उसको कभी एजुकेशन मिली ही नहीं, तो उसके लिए कौन सी बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट है, लेकिन बेस्ट हमें बनाना है। फिर ये बेस्ट बनेगा तो ये सिटीजन्स पे डिपेंड करता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 26 नवंबर 1945 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी हमने अडॉप्ट कर लिया था, अडॉप्ट किया था सिर्फ, मतलब बन के कंप्लीट हो गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और 26 जनवरी 1950 को ये एनफोर्स हुआ, मतलब कि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। एक्चुअली ये कॉन्स्टिट्यूशन पहले एक एक्ट था जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बोलते हैं। वो एक्ट ब्रिटेन वालों का था कि उस एक्ट के तहत हम लोगों ने ये यहाँ पे करना था। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये उसी एक्ट को प्रोलॉन्ग किया है जो हम 26 जन 1950 को हमने इंप्लीमेंट किया, और उसके बाद से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं। ठीक है, थैंक यू।